Hello everyone, welcome back. Today we are going to have a discussion analysis of GS1 paper of the recently concluded GS mains exam. Optional अभी बाकी है, but yes, GS papers are out and we will discuss them and we will try to understand कि हमारा future strategy जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए. When we talk about GS paper analysis, these are certain things which you should know as an aspirant. You should know about the subject-wise weightage and distribution. You should know about the difficulty level, whether what was the weightage of static versus dynamic. You should know about the trend. अब ये जो questions आए हैं उसका क्या trend है, क्या analysis निकल के आती है, and based on that there are certain golden takeaways जो हमें future के लिए ready होना चाहिए. So we will understand them one by one and let's discuss. So talking about subject-wise weightage, if we see history and art and culture if we include, then 30%. Society questions, they have 30% weightage and geography 40%. One by one we will try to understand about all the nature of the question as well, that history and art and culture when we say, मैंने ये जानबूझ के अलग रखा है because history में आपकी ancient medieval modern history आती है and post independence आता है, world history आती है, but art and culture has been given as a separate heading, separate syllabus in mains also, prelims also, so art and culture also, but दोनों को मिला के वी कैन से दैट हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर 30%. सो ब्रॉडली ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. विद इन ज्योग्राफी ऑल्सो वी विल हैव सर्टेन सरप्राइजेस. ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, रिसोर्सेज रिलेटेड तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाता है. सो वी विल अंडरस्टैंड देम. When we talk about subject wise, let's discuss first history, art and culture. Okay, so history and art and culture we see cumulatively 30% weightage. So history and art and culture से ये सारे questions आए हुए हैं आपके. Harappan architecture, again from ancient history, but the bent was art, architecture and culture. उस point of view से देखेंगे. So the question was specific on architecture. Harappan architecture की जो features थे उनको discuss करना था. Second question was about Akbar's religious belief and religious system जो उसका था वो किस तरीके से चीजों को करता है. So again this question is from medieval history but religion. So again it is art, architecture and literature. तो वो जो फॉर्म आता है वहां से आ जाता है. अदरवाइज यू कैन सिंपली रीड इट फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. नेक्स्ट चंडेला आर्ट फॉर्म्स. तो ये जो तीन हुए क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर. यू कैन कीप इट आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री. सो चंडेला आर्ट फॉर्म, खुजराहो टेम्पल्स, तो उसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि द वे द स्कल्प्टर्स हैव मेड इट, वो एक लाइव फॉर्म लगता है, विगर लगता है. सो दैट वे द क्वेश्चन फोकस वाज ऑन दैट. Then Mahatma Jyotirao Phule's writings and reforms, again from modern India. So this is modern Indian history. Indian consolidation. So from post-independence, India post-independence consolidation, the question has come. And again, the question was very, you can say static, or you can also say it was very generic, because there they have asked post-independence consolidation related to polity, economy, education and international relations. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन आया है. एंड देन देयर वाज अ क्लासिक क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ वी विल सी द रीसेंट ट्रेंड्स, लास्ट 10 ईयर्स के भी ट्रेंड देखते हो तो बहुत डीप, कुछ ही साल में, in only in few years they have asked very specific and very deep questions. Otherwise the questions are manageable if you read your NCERTs. For example, this year's question was on French Revolution and French Revolution's contemporary relevance. So world history. So world history, post-independence, modern history, and then the remaining you call it from ancient history or art and culture. So this was the weightage of the history and art culture. So 3 questions from art and culture, 3 questions from modern history, world history and post-independence. But the problem is कि जब हम हिस्ट्री प्रिपेयर करते हैं ये हिस्ट्री बहुत सताती है, ये हिस्ट्री बहुत डराती है, एंड जो स्टूडेंट्स का मेजॉरिटी टाइम है हिस्ट्री ऑक्यूपाई करता है. बट इफ यूल सी द क्वेश्चन वेटेज हियर, इफ यूल सी इट इज 30%. सो सताता है. एंड समटाइम्स वी हैव दिस टेंडेंसी, सर आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ेंगे, सर वी विल नॉट रीड मॉडर्न हिस्ट्री. डोंट डू दैट मिस्टेक, डोंट कमिट दैट मिस्टेक, बिकॉज हियर यू कैन सी द वेटेज. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट यू शुड नॉट स्किप एनीथिंग. Whatever is given in the syllabus, whatever is part of the syllabus, that heading you should read and you should cover it from your NCERTs, static books, standard books. वो सारी बातें हम आगे बाद में करेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है. बट ये तो क्लियर हुआ कि कुछ स्किप नहीं करना है. एंड द क्वेश्चंस आर like this. You can see the weightage. Modern history इतनी ज्यादा हम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम एंड आवर बिपिन चंद्रा एंड NCERTs, क्वेश्चन आया एक.
And all these questions, if you will see and if you will trace why they have been asked, you will find some contemporary relevance. For that matter, French Revolution or post-independence in general, this social reform related, कुछ ना कुछ relevance होता है, लेकिन हम relevance guess करके preparation नहीं कर सकते. So what we have to do? We have to keep a thumb rule कि जो भी syllabus है, syllabus को thorough coverage करना है. Okay? So this is about our history, art and culture. Now moving to next subject, society. So society, again you can see 30%. 30% means 6 questions were asked from society. And again the questions were analytical, deep analysis. Not very factual the way it was in art and culture. Not very factual the way it was in post-independence consolidation or world history. Here the level of the question was analytical. देखते हैं. So here you can see 6 questions were there. For example, there was a question on a smart city, question number 8, 10 marker. Smart cities का question था, and the question has been linked with urban poverty and distributive justice, interdisciplinary in nature. So you have to talk about that how smart city mission or how the smart cities are helping in reducing this urban poverty and also playing a role, a tool as distributive justice. So this was the nature of the question. ये आपको ध्यान रखना. So society का भी interlinkage है, governance का भी interlinkage है. However, we prepare governance in GS paper 2. But the way you will write, it will have society का tone. Second question, again it was a surprise question. Ethos of civil service. See here ये justice word जोड़ दिया. जनरली वी रीड जस्टिस एंड ये सारे वर्ड्स GS2 में. तो आपको जो इंटरडिसिप्लिनरी इंटर GS लिंकेज करना है, GS1, GS2, GS3, GS4, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि सर ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट GS4 में हम GS1 की चीजें कैसे लिखते हैं. यू नीड टू राइट, यू नीड टू इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू इंटीग्रेट दोस कीवर्ड्स. एग्जांपल्स. दिस क्वेश्चन ऑन इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज reflect or should talk about more about be rooted in professionalism and nationalistic consciousness. This was the nature of the question. Again a 10 marker. Now in last few years, last 1 or 2 years, you would have read about Pooja Khedkar का केस हुआ, करप्शन के जितने केसेस हुए, यंग ब्यूरोक्रेट्स, यंग सिविल सर्वेंट्स कैसे करप्शन के चार्जेस पे फ्रेम किए जा रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन आई हैव केप्ट डेलिबरेटली इन सोसाइटी बिकॉज ये और कहीं GS1 में फिट नहीं होता है. बट इसका टोन देखोगे, सिविल सर्विसेज, इट इज कमिंग फ्रॉम ईदर GS2 एंड मेजरली फ्रॉम GS पेपर 4. बट द नेचर इज दैट इट शुड बी रूटेड इन प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस. नेशनलिज्म, right? Society, professionalism. However, lot of the content which you are going to write will come from GS4. But the tone has to be of society wala tone because of its impact. That's why they are saying that professionalism and nationalistic consciousness. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में भी हम पढ़ते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका क्या रोल रहा है कंसोलिडेशन में. Then the next question, globalization and aggressive consumer culture. So there was a linkage of that how globalization, is it true, or the analysis was asked that do you find that this globalization is leading to aggressive consumer culture. तो ये आपको एनालिसिस करनी थी. अगेन a 10 marker. Coming to the next question of society, sustainable growth with environmental protection versus poor people's need. I have kept this question in society because अगर ऐसे देखोगे तो sustainable growth and environmental protection you can keep it in geography, climate change, GS3. But here they have linked with that if we are protecting the environment with sustainability, sustainable growth, if we are targeting economy ka concept, if we are targeting sustainable growth with environmental protection, is it not affecting poor people's need? So we read about poverty in GS1. So society. तो ये society का classic question है and classical analysis है when we talk about such kind of debates are there कि अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हो तो environment protection versus urban people, या हम FRA लेके आए प्रोटेक्शन करते हैं and we are protecting our wildlife sanctuaries, we are protecting national parks, but at the same time what about the rights of the tribal people? Again this year also there was a question on tribal development is more nowadays is focusing only is talking about displacement and rehabilitation. So this was again these two questions had linkage. So here it was specific to tribal, here it is specific to poor people's need. एक तरफ आप फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस डायलेमा, व्हाट अबाउट दिस ट्रेड ऑफ
So there were two questions like this. One is with respect to poor people and tribal. Okay. Now coming to the next question, fast food industries versus health concerns in modern society. फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज एक हमारा है ज्योग्राफी में भी, बट वो ज्योग्राफी, लोकेशन, रिसोर्सेज से रिलेटेड है. हियर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड दैट टू इन मॉडर्न सोसाइटी. सो हियर द फोकस वाज दैट हाउ दिस ग्रोथ ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्रीज एंड द रीसेंट ट्रेंड इज affecting or is a real cause of concern for health in the modern society. So it is a social problem. So that's why these questions I have categorized and kept under society. क्योंकि टोन जो है सोशल टोन है. So these 6 questions were there in from society section. So here we have seen the weightage and what kind of question has been asked. Now majority questions now we will find is from geography. So geography every year, if you take from 2013 onwards, this new pattern was introduced. So from 2013 onwards till now, in all these years, the focus, the weightage of geography has been more. Why? Because geography के जो topics हैं, physical geography, human geography, industries and हर चीज वो कुछ ज़्यादा ही है, syllabus ही ज़्यादा है. So here we will see the questions which has been asked from geography. अब geography से आप देखो, the first question, पहले हमने 10 markers रखे हैं, then 15 markers रखे हैं. So here the question was on climate change and sea level rise on island nations. So again interdisciplinary linkage, climate change and the sea level is rising and its impact on especially island nations. So that we had to address. So it was interdisciplinary linkage, current affairs linkage, everything was there. Talking about the second one, non-farm primary activities and physiographic features. So the question has been asked, जैसे आप क्लास 8 की ज्योग्राफी में पढ़ते हो, क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ते हो, about different types of activities, farm activities, non-farm activities, primary activities, secondary activities, tertiary activities. Even we read in human geography, India में चाहे world में, we read it in human geography 11th and 12th as well. So the question is saying non-farm primary activities and its linkage with or its distribution or its prevalence with respect to the physiographic features of India. तो इस तरीके की एनालिटिकल हैबिट आपको डेवलप करनी है, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव वी हैव टू डेवलप. नाउ टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी, अगेन नाउ दिस पार्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी टॉकिंग अबाउट एनर्जी. एनर्जी एक हमारा GS3 में भी है, वो वाली एनर्जी नहीं. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रीज, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ एंड दैट टू जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज इन GS1. So natural resources में solar energy and its relation was asked with respect to ecological and economic benefits, and this question is again offered 10 marks. So you have to analyze solar energy here from what point of view? From economic benefit and ecological benefit. So this kind of interlinkage was there. Solar energy के बारे में पर से क्वेश्चन नहीं है, but solar energy को ध्यान में रखते हुए आपको ये benefits को analyze करना है. Right? So we have to find, if it is a 10 marks, then we have to maintain the balance. Two pages only you are getting. So how much space you should give to describe solar energy, how much space you should dedicate to ecological and economic benefits, and many people, they end up writing all the steps being taken by the government. तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है. Then again a very classic and static question was tsunami. On tsunami also the question was, it was again a 10 marker. Question was on formation and consequences. Next question was offshore versus onshore oil reserves. We read such resource distribution in our human geography. Class 8th, class 10th, then class 11th and 12th as well. So it is about offshore versus onshore oil reserves, what their expansion and differences between them. And it was a question of 15 marks. So you will get 3 pages. So ये हुआ हमारे geography के questions and the remaining geography questions are here. So when we talk about the remaining questions, these questions why I have kept separately, because थोड़ा सा इनका separately नहीं, कुछ एक question जो है surprises भी मिलेंगे, लेकिन उसका direct integration है and it is interdisciplinary in nature. For example, the question was on AI, drones and their role in GIS and remote sensing.
in locational and aerial planning. So whenever we talk about land use, whenever we talk about planning of the land, so here they have integrated the technology. And classical जो आप geography पढ़ते हो उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं, बट GS1 में जब हमें ये मिलता है तो हमारे लिए सरप्राइज एलिमेंट होता है कि अच्छा ये कहाँ से टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, कहाँ से एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ गया. सो हियर द फोकस वाज ऑन दैट यूज ऑफ AI, यूज ऑफ ड्रोन्स, एंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी लाए. कैन यू ऑल प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट स्कीम जिसको गवर्नमेंट ने ड्रोन्स का यूज करते हुए एरियल मैपिंग के लिए यूज किया है. प्रीलिम्स में हम इस स्कीम को भी पढ़ते हैं. सो इट इज, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्कीम और दैट पर्टिकुलर प्लान, जहां पे AI एंड ड्रोन्स का एंड रिमोट सेंसिंग का यूज, हाउ इट कैन बी यूज्ड एंड इंटीग्रेटेड इन एरियल एंड लोकेशनल प्लानिंग. सो वो एनालिसिस आपको करनी थी, कुछ फैक्ट्स भी देने थे. Talking about again a very static question, it was 15 marker, tectonic movements and its relation with the formation of continents and oceans, reshaping of continents and ocean. So this question was asked. And the last question was population density and distribution. So again, see the linkage, population density and distribution. It is human geography, but they have linked with Ganga basin. Ganga basin में population density और distribution कैसे हुआ है, and especially in the context of land, soil and water resources. So a lot of interdisciplinary approach has been followed in this year's paper. Okay? So we have seen the subject wise weightage of history, society, geography. Yes, history and art and culture I am clubbing together. Now talking about the static versus dynamic understanding, that also we should have. For example, here you can see static, dynamic and mixed. So lot of questions have been asked from static. Yes, 9 questions has been asked from static, 8 questions has been asked from dynamic, and 3 questions were mostly mixed. Okay, interdisciplinary थे सारे ही, हम उनको एनालाइज तो करेंगे ही इंटरडिसिप्लिनरी वाले को, बट द हियर द फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इज दैट स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट हाउ इंपॉर्टेंट is our static portion when we say NCERT is standard books, and at the same time dynamic is also important, and same time the interlinking is also there, right? So let's understand quickly about the static and dynamic questions. So here we can see static. Harappan architecture, the question was asked, a classical example of static. Akbar question, static from medieval history. Chandela art, again art and culture, static. Non-farm activities, largely static because it was asked non-farm activities and its relation with the physiographic zones, physiography of India. Okay, Tsunami, static. Phule ji, Jyotirao Phule, हम पढ़ते हैं इनकी writings and social reforms, static. Post-independence, the question was again very static. Post-independence consolidation in the field of economy, polity, education and IR. French Revolution पढ़ते हैं, its relation in contemporary. तो ये तो जब हम static पढ़ते हैं तो इसको जरूर ध्यान में रखते हैं. And tectonic movement. So these questions were static in nature. Okay, so these 9 questions were static in nature. Now again, let's have a look at the dynamic questions. So dynamic questions here if we analyze, then the dynamic questions are related to climate change. Climate change है and बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलती है. So climate change and sea level rise and its impact on the island nations, बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती है, बहुत सारे आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं around the vulnerability to the island nations. So again climate change and dynamic, lot of dependence on current affairs. Solar energy, lot of scheme government is bringing up, and then we are talking about renewable, non-renewable resources. We are talking about our 500 gigabytes, GB नहीं, gigabytes तो गड़बड़ हो जाएगा. Then we have our own target in solar energy कि इतना लाना है, ये target है. So solar energy again very dynamic. Smart cities, we know dynamic, but yes, the analysis we have to relate it with the urban poverty. सिविल सर्विसेज एथोस अप्लाइड है, ये क्वेश्चन GS4 का है, बट हियर वो अप्लाई किया गया है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कॉन्शियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म बिकॉज ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड लार्जली ऑफ द केसेस विच आर हैपनिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, पूजा खेड़कर और बाकी जो करप्शन के केसेस हैं. ग्लोबलाइजेशन, इसका लिंकेज हमने देखा है जो ये कंज्यूमरिज्म कल्चर है उससे रिलेटेड. AI ड्रोन्स अगेन डायनेमिक. सस्टेनेबल ग्रोथ डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये एंड इट्स लिंकेज विद द पुअर पीपल. ओके,
एंड फास्ट फूड हेल्थ, ये सारे हमारे डायनेमिक नेचर है। बहुत सारे डिबेट चला है, FSSAI बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, ईट राइट मूवमेंट एंड ऑल्सो फास्ट फूड एंड हेल्थ, इट इज अगेन अ वेरी डायनेमिक लिंकेज। सो हियर वी हैव सीन 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम डायनेमिक। सो फाइन बैलेंस इज देयर। देन मिक्स्ड एंड स्टैटिक का भी लिंकेज है। ऑफशोर, ये मिक्स्ड एंड स्टैटिक में ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स, हियर वी आर लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन स्कीम्स एंड जो कॉन्टिनेंटल शेल्स हैं वहां पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं। सो लॉट ऑफ डिबेट इज गोइंग ऑन, बट द कैटेगराइजेशन वी रीड इन आवर स्टैटिक पोर्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज अंडर मिक्स्ड कैटेगरी। Ganga basin and population density and all we read a lot from static portion, but it has its linkage with respect to the present distribution we should know. So इसलिए वो dynamic aspect हमें integrate करना ही पड़ेगा इसमें। And the tribal displacement and rehabilitation, again it is a mixed, because tribal के बारे में हम बात करते हैं and it is going on since long time, ये स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद से ही चल रहा है। सो ट्राइबल डेवलपमेंट इज अ स्टैटिक कंपोनेंट, स्टैटिक topic, but when it comes to tribal displacement we need to bring displacement and rehabilitation, we need to bring the concepts and the acts which are dynamic in nature and which are recent in nature. तो ये एक हमने देखा। So if we analyze here static versus dynamic, you will find that it is fine balance, 50-50% आप बोल सकते हो। So you need to focus on static as well, you need to focus on dynamic as well, but majority जो जनता होती है वो यहीं पे प्रॉब्लम करती है। If you are in your first attempt, initial attempt, and you have just started the preparation, so you are focusing a lot on static NCERTs, standard books and NCERTs, इसी पे फोकस रहता है और किसी के नोट्स। So आप जब initial days में preparation करते हो, you ignore the dynamic component, and the people who have given multiple attempts, let's say 1 or 2 attempts, you focus more on dynamic attempts and you ignore static. So in our preparation we have to maintain this balance, that I'm not ignoring static, I'm not ignoring dynamic, and I have to maintain the balance. I need to maintain the balance, at the same time हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका interlinkage कैसे करना है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। तो अब ये जितनी भी हमने चीजें देखी स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सब्जेक्ट वाइज, मैंने आपको वहां पे जो भी एनालिसिस की वो तो बताया ही। देयर आर सर्टेन अदर पॉइंट्स। वन इज इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी को पॉवर्टी से लिंक करना, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ को लिंक करना अगेन पुअर से, राइट। तो इस तरीके के इंटरडिसिप्लिनरी AI एंड ड्रोन्स, इनको लिंक करना रिसोर्स प्लानिंग से, लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस, अगेन लिंकेज। सो इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आर देयर। सोसाइटी का हमने देखा, सरप्राइज क्वेश्चंस थे हमारे पास ऑफ एथिक्स, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन, लिंकेज विद सोसाइटी। So here were certain surprises as well. Science and tech, environment, ethics, value oriented question in GS1. However, we don't expect such question in GS1, but we have to be ready, because जो syllabus का pattern है और जो syllabus का trend है, UPSC अब ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उससे एग्जॉस्ट हो रहा है। इफ यू सी द लास्ट 10 years क्वेश्चन, डेफिनेटली जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन का नेचर आया, फिर पेरिफेरल एरियाज का era आया। So now it is interdisciplinary linkage, so be ready for such surprises, okay? Then almost every historical period has been represented in this year's paper. There was a question from ancient, medieval, modern, post independence, world history, art and culture. तो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा कि मिल रहे हैं। Also even the straightforward themes were framed analytically. So when we say, यहां पे मेरा फोकस आपको यह बताना है कि एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल थिंकिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। हियर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस रेलेवेंस टुडे, सो एनालिटिकल, इट इज नॉट जस्ट इवेंट, बट व्हेन वी रीड एंड व्हेन वी प्रिपेयर वी फोकस मोर एंड ओनली, आई वुड से इन इनिशियल डेज, ओनली ऑन इवेंट्स। The focus is on relevance today, so you have to develop analytical perspective, okay? फास्ट फूड इंडस्ट्री गिवन हेल्थ कंसर्न, सो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्री फैक्ट्स जो हम जीएस में पढ़ते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फैक्ट्स, इंडस्ट्रीज कौन सी कहां से हैं, एनसीईआरटीज में भी यही पढ़ते हैं, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। बट द फोकस इज ऑन फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन द हेल्थ कंसर्न्स,
उसका लिंकेज आपको हेल्थ कंसर्न एंड दैट टू इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो थोड़ा सा हमें कंटेक्स्ट लाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ये सारी चीजें नहीं थी। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटी हम एज अ प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, एज अ स्कीम पढ़ते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, बट the question has been analytical in nature when they are asking how smart cities are playing their role in distributive justice and reducing the urban poverty. So it is beyond infrastructure, beyond a scheme, beyond analysis of the whole soul or silos or compartment based analysis of the schemes only. I hope I am clear on this. So with this analysis you would have got a deeper perspective of how, what is the present trend and how you should get ready. So you cannot ignore static, you cannot ignore your current affairs. That is, current affairs तो आपकी spine है, static भी spine है. So these two pillars are important, and we have seen that what kind of questions are being asked. Now in the end I would give you certain golden rules, golden takeaways which are important for you, which will give you a direction that how you should prepare in future. Remember this, static will get you entry, dynamic will get you rank. This is very important. It is tested everywhere. It is tested in prelims also, mains also, and interview as well. So here are certain golden takeaways from this year's GS1 paper. That is, build a solid static base from NCERTs, from standard box. Important. Mains perspective, not prelims perspective, since we are talking about only mains. So mains perspective say you have to build a very strong static base from NCERTs and standard books. Then history preparation must be holistic, not selective, and this is one of the biggest problem of the aspirants when they read history. Sir, I don't like history. Sir, history is not my cup of tea. मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है. ऐसी बातें नहीं करनी है. आपको क्या करना है? हिस्ट्री प्रिपरेशन को होलिस्टिक बनाना है. राइट फ्रॉम एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस. हिस्ट्री अगर आप होलिस्टिक पढ़ोगे तभी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनोगे. इस बात को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है. Third is mains integration of current affairs is the key. I have seen that many students when they prepare for current affairs, their whole and sole focus is on prelims related current affairs, and जब आप prelims related current affairs पे focus करते हो, then your focus is only on facts and you are not focusing on such kind of analysis which UPSC is asking. So mains current affairs, you need to prepare and integrate in your preparation. You need to prepare according to mains point of view. Okay. So you need to keep a track of reports, policies and global debates, case studies, example from the current affairs so that you can make your answer holistic. But वो कब होगा? जब आप उस point of view से prepare करोगे. Next is practice interdisciplinary answer writing with example data and case studies. When we prepare, this is one of the problem and a mistake which you should avoid. When we say answer writing, we do lot of answer writing on static questions. Sir, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसकी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बट करो, प्रॉब्लम नहीं है. बट द पॉइंट इज दैट इफ व्हेन यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ आंसर राइटिंग, यू शुड जज or you should take those questions which are as per the latest trend of UPSC. Don't solve simple question. What is tsunami? एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका भी नेचर देखना है आपको कि जितने क्वेश्चंस हैं उसका नेचर क्या है. इज इट इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर? इज इट स्टैटिक वर्सेस डायनामिक? सो इफ यू आर राइटिंग answers of those questions or if you are practicing such kind of questions, then you are on the right track. Develop a value based perspective. Social justice, sustainability, equity. Whenever you are reading any subject, especially GS paper 4 के जो concept हैं, उनको GS1, GS2, GS3 ऐसे हर जगह उनको use करना है. We have to implement and we have to see whether this value perspective is coming in our thought process or not. If we are analyzing sustainability, then we have to take care of animals as well. We have to take care of other stakeholders like poor people, tribal people. Right? So if we are taking this value premise in mind, so are we able to justify our answer on those lines? और वो कब होता है? जब आप ये perspective develop कर पाते हो. Right? So एक holistic thinking, एक value based perspective, and especially this year's essay paper we have seen was totally dominated by this value based perspectives and the topics. And the last one I would say is develop analytical thought process. It is not just a memory test, and the problem is here only. Most of the aspirants I have seen, when they come to this preparation, first they will give lot of time to this classes,
and notes making. After giving classes and time to notes making, the problem is you are not focusing on developing the analytical perspective. When you don't develop the analytical perspective, you are lost and you lose your time, your energy in just making notes and focusing on what has been taught and what has been given in the standard books and static books like NCERTs. अब प्रॉब्लम ये होता है कि इन 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, हमारा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं हो पाता है. एंड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, वैल्यू बेस्ड पर्सपेक्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और करंट अफेयर लिंकेज से ही डेवलप होता है. एंड व्हेन वी डोंट वर्क ऑन दैट, देन वी ऑलवेज क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, सर माय मेंस प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, और समटाइम्स यू डोंट हैव इवन दिस रियलाइजेशन. Sometimes you prepare thoroughly for prelims and then mains, and then you say, sir, I have prepared but I'm not able to crack mains, I'm not able to qualify mains, मेरा mains में रुक रहा है. And let me also tell this linkage. Today morning only I was discussing with one student. He told, sir, मेरा 2 बार से prelims नहीं हो रहा है. The point is, if you prepare thoroughly for your mains, that this mains analytical perspective will also help you in prelims as well. Why? Because जो prelims के questions हैं उनकी भी depth, उनकी भी analytical approach बढ़ती जा रही है. Right? So this is my these are my golden takeaways which I want all of you to follow. Like this, we will come up with GS2 also, GS3 and GS4 analysis, and then we will discuss the subject wise question also. For example, history के question और content आपसे discuss कर लेंगे, geography के कि आपको लिखना क्या चाहिए था, so that our followers and whosoever is going to watch these videos, you will get this taste of quality preparation. राइट, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन. एंड जब ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है तभी आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में ले चलते हैं. एंड दिस इज आवर मोटो, दिस इज आवर वैल्यू सिस्टम, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम इन द फास्टेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे, एंड दैट विल कम ओनली विद डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम ओरिएंटेशन. राइट, सो मेक यूज ऑफ these videos guys and see you all in the next video. Take care. And if you want us to make any video on any specific topic, please drop us a message in the comment section. See you all. Take care. Bye-bye.